Hello, students. I hope you all are fit and fine. Today, again, I'm here to tell you something more interesting about one new technique known as tissue culture. As you all are very familiar with this word tissue, today, this word is going to have its significance that I will prove through this topic tissue culture. So, let's begin. Exactly what a tissue culture? Tissue culture is a growth of tissues or cells in an artificial medium separate from an organism. What is it? It means that what are tissues? First, we have to understand tissues are the group of cells which have similarity in the function and the origin or structure of that particular group of cells. Now, what does it mean? It means that all the cells which are grouped together and performing same function and having same structural origin, they all are considered as tissues. They may be meristematic, that means actively dividing, or they may be permanent, that means they have already specialized with their structure and function. These type of cells are taken out from their own plant or animal source, then providing them artificial nutrients and extra supplements in the labs to develop different type of other organisms or varieties. If we are able to do so from those particular tissues, then that technique is known to be as tissue culture. Most of the people, those who are aware about different types of techniques like IVF, in vitro fertilization, they are very much familiar with the word cloning. They can easily understand the concept of tissue culture in this particular slide. How? This tissue culture is going to start with one particular American pathologist, Montrose Thomas Burroughs. This person basically worked on the animal tissues, but his concept was very clear, and that was a very helpful concept of developing a technique called tissue culture. What he said that all the cells which do not have their own structural significance, that means on providing them nutrient or providing them supplements, if the cells have the capability to transform themselves or change themselves, then that cells can be taken out from a particular organism or any type of a plant or any unicellular microorganism, and if we are start providing them and developing them in such a manner that they start fulfilling our needs of developing new varieties of organisms, then these cells are the basic boon or important particular basis of starting and developing a tissue culture. Like for example, animals के केस में स्टेम सेल या एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में तब पाई जाती हैं जब हम अपनी मदर के टमी के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती हैं जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, तब वो हमारी बॉडी के अंदर एकदम से डेवलप होकर के मॉडिफाई होती हैं और मॉडिफाई होने के बाद हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करती हैं। In the case of animals, they are embryonic cell or stem cells. But in case of plants, everyone is very much aware the word meristematic cells. The cells which have the capability to divide themselves and can develop new particular structures. So, what is tissue culture? टिश्यू कल्चर वो कल्चर जिसमें कि हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ सेल्स को लेंगे, उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के किसी भी सोर्स से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको आर्टिफिशियली डेवलप कराएंगे
और सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करके हमारी नीड के अकॉर्डिंग नई वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर लेंगे. In the case of plant tissue culture, you have a look here. This is one carrot. Carrot का जो ये tip region है, this region is rich with the meristematic tissues. इस tip region को कट किया, यहाँ से मैंने cells extract की. जो cells extract की उनको मैंने explant कहा. Explant means the part which is not part of this particular structure. वहाँ से उसको लिया, आर्टिफिशियली लैब के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम्स प्रोवाइड किए और उसको ग्रो कराया. क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ लंप ऑफ सेल्स एंड दैट लंप और ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज कैलस. इस सेल ने जब खुद को न्यूट्रिएंट पा करके डेवलप किया या बहुत तेज़ी से डिवाइड किया, तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स बन करके आई वो कहलाई कैलस. ये कैलस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसकी वजह से हम इसके बाद जो भी हार्मोन्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स सेपरेटली या स्पेसिफिकली प्रोवाइड करेंगे इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स को, ये अपने आप डेवलपमेंट उसी अकॉर्डिंग करेंगी. लाइक अगर मैं इनको शूट डेवलपमेंट के लिए बोलूँगी तो ये शूट डेवलपमेंट करेंगी. अगर मैं रूट डेवलपमेंट के न्यूट्रिएंट्स दूंगी तो ये रूट डेवलपमेंट करेंगी. इन द सेम मैनर यू कैन सी हियर, कैलस को हमने पहले रूट एंड फिर शूट डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स दिए और फाइनली वो एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो गया. दैट मीन्स वो छोटा सा पीस जो एक टिश्यू था, हम उससे एक नया ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा प्लांटलेट डेवलप कर सकते हैं. You can see here practically it is proven and is being doing in world level laboratories also. You can see here very clearly इनके पास जो group of cells यहाँ दिख रही हैं that is callus. ये nutrient medium है और इनमें ये particular growth या specific type of shoots are developing. In the same manner इनमें roots development भी होता है. Now you can see that वहीं से ये complete plantlets बनते हैं उन explant से और फाइनली यही एक्सप्लांट्स आगे जा कर के ग्रो कर दिए जाते हैं नर्सरीज़ में और नर्सरीज से नए प्लांट्स आप मार्केट से ख़रीद करके इस्तेमाल करते हो या यूज़ करते हो. दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग और सेविंग डिफरेंट अननोन वेराइटीज़ और एक्सटिंक्ट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स में टिश्यू कल्चर ज़्यादा कंपैरेटिवली सक्सेसफुल है in comparison to animals. There are many more reasons for it. Plants के अंदर एक property होती है that is totipotency. That means उनकी cells के अंदर total potential है कि वो एक नया organism develop कर ले. पर ये प्रॉपर्टी ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पेशली एनिमल्स में ही जो कैटेगरी सबसे टॉप पे है हमारी, या फिर हम किसी और हमसे ही मिलते जुलते या रिजेंबल ग्रुप करने वाले ऑर्गेनिजम्स को अगर कंसीडर करें तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी धीमे धीमे करके ऑलमोस्ट निल हो जाती है. एंड दैट इज़ द रीज़न एनिमल्स डू नॉट शो सो मच ऑफ वेराइटी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लांट्स. Here you can see that through plant tissue culture we can do very different types of activities. Like we can go for seed culture when we take a seed, meristem culture when the meristematic tissues are there. अगर हम सेल्स निकाल लें और सेल्स का सेल वॉल रप्चर कर दें, सेल मेम्ब्रेन हटा दें, तो जो स्ट्रक्चर बचता है दैट इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट एंड दैट वी कैन यूज़ फॉर द प्रोटोप्लास्ट कल्चर. पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन इस्तेमाल किया जाए अगर प्लांट का, देन इट इज़ नोन एज ऑर्गन कल्चर. पॉलन ग्रेन्स यूज़ किए जाए, पॉलन कल्चर. कैलस से कोई चीज़ नई और डेवलप की जाए, कैलस कल्चर. सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स को ही एक्सट्रैक्ट किया जाए, किसी टिश्यू को ना लिया जाए, सेल कल्चर. एम्ब्रियो से डेवलप किया जाए डायरेक्टली प्लांट के, लाइक ओव्यूल्स और सीड्स से पहले की स्टेजेस में जो स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के उनको, देन इट इज़ एम्ब्रियो कल्चर. दिस इज ऑल इन द प्लांट टिश्यू कल्चर. नाउ स्विच ओवर टू द एनिमल टिश्यू कल्चर. एनिमल टिश्यू कल्चर में भी सेम कॉन्सेप्ट. लाइक इन द मेल माउस और एनी टाइप ऑफ एनिमल, उनके स्टेम सेल्स ज़्यादातर पाए जाते हैं उनके पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. लाइक इन केस ऑफ माउस हियर यू कैन सी द टेस्टिस. टेस्टिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. वहाँ से सेल्स एक्सट्रैक्ट की गई, सेल्स को आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराया गया और वहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट में डेवलप कराया गया वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था दैट इज़ नोन एज स्पर्म सेल्स.
दैट कैन यू कैन ऑल्सो बीइंग सीन हियर. अगर हम वहाँ से टिश्यू ना एक्सट्रैक्ट करके, टेस्टिस ना रिमूव करके, टेस्टिस के अंदर से स्पेसिफिकली स्पर्म सेल्स को ही रिमूव करते, तो भी हम उसको आर्टिफिशियली ग्रो करते. अगर सेल्स डायरेक्टली लेते तो सेल कल्चर कहलाता. क्योंकि हमने पूरा ऑर्गन सेपरेट किया तो इसे हमने ऑर्गन कल्चर का नाम दे दिया. Concepts remains the same. You have to select the tissue and that tissue should be cultured outside the body. Here, through this animal culture, you can see it here. Through that particular animal culture, you can see here, this is the babies of monkeys that are developed in the China. Then we can say that animal tissue culture is also being used very prominently these days, although the results are very less. But this concept of tissue culture, of taking or extracting the tissues, is literally going to help many organisms, those who are extinct from the earth. Maybe it's a possibility animal tissue culture or plant tissue culture will help us in giving many more extinct varieties back on the earth some further days. I hope you like my video and enjoy it. Have a nice day.